Yes, good morning, student. Good morning, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Fine, that's really good, and that is what we want for everyone. Student, this board is visible to you? Yes. Oh, that's fine. So now let's move ahead. So how's the weather at your side? Hot or cold? Yes? How's the weather? Hot. Hot. That's nice. Just give me a minute. Yes. So you are saying the weather is pretty hot. Yes, even at my side also it's hot. So there is many things that we are going to cover in today's session. Can any one of you tell me when we say it's really hot or it's really cold, what we are talking about? Yes, when we say it's really very hot, it's really very cold. So what we are talking about? हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? Temperature. टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम कहें एक ठंडा पानी है, ठीक है, फ्रिज से आपने निकाला है ठंडा पानी, ठीक है। एक आपने बर्फ वाला लिया है जिसमें बर्फ है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड यू हैव ल्यूकवार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी और एक बहुत गर्म पानी, ठीक है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, सपोज वी हैव 3 or 4 केसेस, ओके। लेट्स टेक 2 केसेस। मैं अभी आपको 2 केस बता रही हूँ। फर्स्टली अंडरस्टैंड दिस बेटा, okay, let me check the brightness of this. Okay. तो see, अब ध्यान से देखो everyone, pay attention. ये हमारे पास this beaker, I have one more beaker here, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, and one more here, I have this and I have this, ठीक है। अब what we are going to do, suppose here is one person, ठीक है, ये एक पर्सन है, उसने पहले अपना हाथ इसमें डाला, इसमें क्या है? आइस क्यूब, क्या है? बर्फ, ठीक है। एक इसमें डाला, दूसरा इसमें डाला, इट्स कोल्ड वाटर, इट्स कोल्ड वाटर, ठीक है। इसने ऐसे किया। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ योर वाटर इज, यहाँ पर ल्यूकवार्म है। ल्यूकवार्म होता है हल्का सा गर्म, जिसको आप हल्का सा टच कर सकते हो। तो आपको, हम जो नहाने के लिए वो पानी यूज करते हैं, ठीक है। सो इट्स अ ल्यूकवार्म वाटर and it is pretty hot. Okay, it's hot water. Okay, here we have hot water. So now this person, अब यहाँ पर भी एक हमारे पास पर्सन है, उसने एक हाथ इसमें डाला, एक हाथ इसमें डाला, ठीक है। Now you can see, अब हमारे पास 2 केस हो गए। एक केस is this and second case is this, ठीक है। Now from class Daffodil, Ishandeep from Daffodil, beta stand up. Come. Absent. Okay, Jasmine is there. Jasmine. Yes, beta. Paper. Okay, Harsimrat Kaur. Okay. Mehakveer. Again, not present. Okay, better I will call them, who is sitting here. So second row में आ जाओ, जो corner girl है. Second row, corner, not you beta, on the other side, जो दूसरी side corner में है. Yes, beta. So now beta, tell me, अब जो ये person है, ठीक है, इसको किस वाले में ज्यादा ठंडा लगेगा पानी? Where it feels more colder? Ice cubes. Ice cube. And in this case, cold water? Yes.
कोल्ड वाटर में कम लगेगा एज कंपेयर टू आइस, यस और नो? मैम कम लगेगा। कम लगेगा, ठीक है। ऑल दो बोथ आर कोल्ड, दोनों ही ठंडे, लेकिन आइस इज प्रिटी मोर कोल्ड एज कंपेयर टू आइस वाटर, ठीक है। तो अगर हम कहें कि कौन ज्यादा गर्म है, तो व्हाट वी से, कौन गर्म है, आइस और कोल्ड वाटर? मैम कोल्ड वाटर। Cold water. That's good, beta. That's good. Sit down. Now coming to second case. Okay. For the second case, Lotus से Jashanpreet. Jashanpreet from Lotus. Present or not? Okay, I think Jashanpreet. Are you Jashanpreet? Yes, beta. Okay, Jashanpreet is there. Not present. Okay, तो middle row, third bench. ठीक है. Left side boy आ जाओ. On left side. So now beta, here in this case, now this boy has put hand in both. One is lukewarm, another is hot. ठीक है. अब ये बताओ किसमें उसको ज्यादा गर्म लगेगा? बेटा आई एम नॉट एबल टू सी यू, जरा सेकंड बेंच के पास जाके खड़े हो. स्टैंड देयर, आई एम नॉट एबल टू सी. यस, नाउ स्पीक अप. Lukewarm or hot water, which he feels is more hotter? Lukewarm is more hotter. ज्यादा गर्म ल्यूकवार्म होगा या फिर हॉट वाटर? ल्यूकवार्म क्या होता है? गुनगुना पानी, हल्का सा गर्म, जो गार्गल करने के लिए भी हम यूज करते हैं, नहाने के लिए भी उस टाइप का पानी यूज करते हैं. हम टच कर सकते हैं, गर्म तो नहीं लगता, लेकिन अगर उबलता हुआ पानी है कैसा लगेगा? ज्यादा गर्म या कम गर्म? यस बेटा, ज्यादा गर्म कौन सा है, हॉट वाटर और ल्यूकवार्म? Yes, it's hot water that is more hotter. ठीक है, sit down बेटा. अब देखो बेटा, सभी ध्यान से देखो. यहाँ पर हमने दोनों ही ठंडी चीजें ली और here we took both hot. ठीक है, ऐसे किया. अब यहाँ पर हमें ये पता लगा कुछ चीज ज्यादा गर्म हो सकती है, कुछ चीज कम गर्म हो सकती है, कुछ चीज ज्यादा ठंडी हो सकती है, कुछ कम ठंडी हो सकती है. ओके, सो बेसिकली क्या टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ कोल्डनेस, कोई चीज कितनी ठंडी है. डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज कितनी गर्म है. हमें ये पता लगा इससे, ठीक है. हर चीज गर्म है, लेकिन कितनी गर्म है. कोई चीज ठंडी है तो कितनी ठंडी है. सो दैट, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया, दैट इज टेम्परेचर. अब लिखो डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर. इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. कि कोई चीज अगर ठंडी है तो कितनी है, गर्म है तो कितनी है. ठीक है, लिखो, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस. फर्स्ट बेंच गर्ल, फैंसी मिडिल रो, फर्स्ट बेंच गर्ल बेटा, राइट. ठीक है, लिखो इसे, इट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ठीक है, इट्स टेम्परेचर, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं, जो नापते हैं इसको. ठीक है, नाउ लेट्स कम हियर. ठीक है, now board is visible to everyone. Oh, that's fine. So now we know temperature. But how can we measure temperature? Temperature को कैसे measure करेंगे? How can we measure temperature? Have you seen this? किसी ने ये चीज देखी है? What do we call it? Yes, what do we call it? Your voice is cracking. Yes, बेटा, what do we call this? जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं उसको क्या कहते हैं?
आई थिंक आई हैव टू कॉल सनफ्लावर से, सनफ्लावर कॉर्नर रो लास्ट बेंच गर्ल। यस बेटा, यस बेटा, कम नाउ टेल मी the device name that we use to measure temperature। टेम्परेचर नापने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? यस बेटा, व्हाट डू वी कॉल इट? टेम्परेचर नापने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? The device we use to measure temperature. Here you can see what it is. क्या है ये? Yes बेटा, थर्मोमीटर। यस, इट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हमें अपना टेम्परेचर पता लगता है। ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस, इसको भी थोड़ी देर के लिए हम रोक देंगे, ये चीजें हम वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट टाइम करें, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो नाउ, अब जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर, जो ध्यान से सुनो बेटा, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखो। अब कोई चीज जो है, सपोज लेट्स टेक स्टेट्स ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ वाटर, सबने पढ़ा हुआ है? यस, सबने पढ़ा हुआ, रेज योर हैंड। स्टेट्स ऑफ वाटर, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। यस, रेज योर हैंड बेटा अगर ये पढ़ा हुआ है। नॉट अभी, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 6th क्लास, कभी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये। आजकल छोटी क्लासेस में 3rd 4th 5th यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर और 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यस, पढ़ा हुआ बेटा, किया हुआ? यस, सो आई कैन सी रोज, हैंड्स आर रेज्ड। व्हाट अबाउट सनफ्लावर, पेंसी, डैफोडिल्स एंड लोटस? बेटा आप लोगों ने नहीं पढ़ा स्टेट्स ऑफ वाटर? नाउ हैंड्स आर रेजिंग, नाउ हैंड्स आर रेजिंग, ठीक है। फास्ट, जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो, डोंट बी लेजी स्टूडेंट, ठीक है। नाउ, नाउ ध्यान से सुनो, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर क्या है? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हो गए, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये तीनों हो गए पानी के। अब ये डैफोडिल, तो नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये चीज होती कैसे है, ठीक है। नाउ एवरीवन सी हियर, अब हमने बर्फ जो है, ये आप सबने देखा होगा, अगर हम बर्फ जो है बाहर निकालते हैं फ्रीजर से, आफ्टर सम टाइम्स इट मेल्ट्स, है ना, बर्फ पिघल जाती है। पिघलती है नहीं पिघलती है? पिघलती है ना, लेकिन एकदम से नहीं पिघलती। थोड़ी देर आप बाहर रखते हो तो वो धीरे 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 मेल्ट होना शुरू होती है। तो मेल्ट होना मतलब पिघलना। अब ये पिघलना कौन से टेम्परेचर से स्टार्ट हुआ है? दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? वो टेम्परेचर जिसमें जो बर्फ है वो पानी बनना शुरू हुई है, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है। मेल्ट सबको पता है ना, मेल्ट मतलब पिघलना, ठीक है। लेकिन कब पिघलना, कौन से टेम्परेचर पे पिघल रही है, दैट इज देयर मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? यस, यस, इज इट क्लियर? ओके, सो मेल्टिंग मतलब, पॉइंट मतलब टेम्परेचर। देखो पॉइंट जहां जहां है इट इज मीन वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। मेल्टिंग, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें बर्फ पिघलना शुरू हुई, ठीक है। अब आ जाते हैं हियर, इंस्टेड ऑफ रूम टेम्परेचर, ओके लेट्स सी, यहाँ पर हम एक और बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले दीज आर आइस वी हैव, ठीक है, हमने इनको रूम टेम्परेचर पे रखा। तो नाउ दिस इज सॉलिड, अभी क्या है? सॉलिड, लिक्विड में चेंज होने लगे, लिक्विड मींस वाटर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग यानी पिघलना। अब ये पिघलना जब हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, विच टेम्परेचर इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे ये पिघलना शुरू होती है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है एवरीवन, ठीक है। नोट डाउन दिस, इसको नोट करो।
Everyone note down melting point. It is the temperature. It is the temperature. और इसको बना लो, अगर ऐसे बनाओगे तो बेटा याद रहेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. मेल्टिंग पॉइंट. इट इज द टेम्परेचर at which the temperature at which is solid turns into a liquid. कि कोई सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है. सो हियर वी टुक एग्जांपल ऑफ आइस. ठीक है. It is a temperature. Point means temperature. We are talking about temperature here. It is the temperature at which a solid turns into a liquid. वो temperature जिसमें बर्फ या कोई चीज पिघलना शुरू करती है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आ जाता है. अब हमारे पास बेटा ये बीकर है या पैन समझ लो. हमने जो है इसको स्टोव में रखा है, हमने फायर लगाया. ओके, वाटर इज हियर. लेकिन कभी आपने अगर पानी को उबलते देखा होगा या फिर पैन जैसे ही हमने बर्नर पे रखा है वो बॉईल करना स्टार्ट नहीं करता है ना. ऐसा तो नहीं है पानी हमने रखा गैस के ऊपर और वो बर्न जलना शुरू हो गया या बॉईल बबल्स आने शुरू हो गए. नो, इट टेक्स टाइम. उसको टाइम लगता है. ठीक है. और कुछ टाइम बाद जाकर वो जो पानी है उसमें बबल्स आने लगते हैं और थोड़ी देर और बाद अब देखोगे तो बबल्स जो है धुआं बन के हमें ऊपर जाते हुए दिखते हैं. यस, दैट इज हाउ इट हैपेंस. सो अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग, पानी को बॉइल कर रहे हैं. तो क्या प्रोसेस हो रहा है, इट इज बॉइलिंग. ठीक है, हम बॉइलिंग करते हैं. अब बॉइलिंग मतलब क्या हो गया, अब वो गैस बन रहा है. कौन बन रहा है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस. लिक्विड क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है और प्रोसेस इज बॉइलिंग. तो इसका जो टेम्परेचर है जिसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है मींस वाटर इज चेंजिंग इनटू वेपर्स. दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है उबलना शुरू करता है. ओके, जिसमें जो है कोई भी लिक्विड उबलना शुरू करता है. ऐसे तो है नहीं गैस पे रखा और उबलना शुरू हो गया. इट टेक्स टाइम. उसका एक टेम्परेचर जब आता है कि अब उसने उबलना है तभी ही होगा. ठीक है, ऐसे नहीं कि हमेशा ही वो उबलता रहेगा ऐसे गैस पे रख दिया. नो, जब वो टेम्परेचर आएगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, देन इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग. ठीक है. और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. और जो भी हमने मेल्टिंग किया है, मेल्टिंग इज 0 डिग्री सेल्सियस. अब डेफिनेशन लिखो, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. एवरीवन नोट डाउन. इट इज द टेम्परेचर, एवरीवन नोट डाउन. बेटा इसको ध्यान से लिखो, इट इज इन योर सिलेबस बट इट इज नॉट मेंशन इन योर बुक. इट इज द टेम्परेचर at which liquid, अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड. लिक्विड को कुछ हो रहा है. ठीक है, लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस. एक गैस बन रहा है, टर्न्स इनटू अ गैस. इसको ऐसे बना के साथ में लिखोगे सो इट इज इजी फॉर यू टू रिमेम्बर. जल्दी से याद हो जाएगा. ऐसा ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. अब हमने आइसक्रीम्स या आइस क्यूब बनने के लिए रखे हैं फ्रीजर में. डालते तो फ्रीज में नहीं बन जाते ना. ऐसा तो नहीं है कि डाला आपने एज सुन एज यू पुट इन अ फ्रीजर इट स्टार्ट फ्रीजिंग, है ना. ऐसा तो नहीं एकदम से फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है. क्यों नहीं होता, अगेन सेम थिंग, टेम्परेचर नहीं मिला उसको वो वाला जिसमें वो फ्रीज हो जाए.
जब उसका वो टेम्परेचर आएगा किसी भी लिक्विड का कि वो फ्रीज होना शुरू होएगा, ओनली देन दिस प्रोसेस स्टार्ट्स। ठीक है, जब उसका प्रोसेस, जैसे अगर आपने आइसक्रीम बनने, आजकल सीजन है ना, इट्स अभी रेनी सीजन और इट्स हॉट ह्यूमिड, सो यू कैन हैव आइसक्रीम। सो अगर आपने जो है उसमें डाला है, ठीक है, उसमें डाला है, तो ऐसा तो नहीं है 1 घंटे के अंदर बन जाती है ना। किस किसके घर में आइसक्रीम बनती है? कौन कौन बनाता है घर में, या पेरेंट्स बनाते हैं? रेज योर हैंड। ओके, रोज, यस। व्हाट अबाउट सनफ्लावर? सब मार्केट के खाते हो? ओके, दैट्स फाइन। फैंसी, ओके। डैफोडिल्स, ओके। इन लोटस आल्सो, दैट्स गुड। सो अब कौन कौन जो है फ्रीजर बार बार खोल के देखता है कि आइसक्रीम बन गई या नहीं बनी? कौन चेक करता है? ओके, रोज, ओके। सनफ्लावर आल्सो, फैंसी चेक करते हो? यस। डैफोडिल्स, ओके। लोटस चेक करते हो फ्रीजर खोल खोल के कि बन गई या नहीं बन गई? नहीं करते ना, बड़े शरीफ बच्चे हो, ठीक है। बट इवन आई, अगर मेरे घर में बन रही है तो आई ऑल्सो यूज टू चेक इट अगेन एंड अगेन कि अब बनी, अब बनी, अब बनी, है ना, कि कब खाएंगे, है ना। सभी को एक्साइटमेंट होती है कि खाएंगे, बनी है, बनने को डालिए। सो क्या होता है जब हम फ्रीजर में डालते हैं, 1 घंटे में नहीं बनती, 2 घंटे में नहीं बन रही, 3 घंटे में नहीं बन रही, जब हम 4 और 5 आवर्स में देखते हैं तो इट स्टार्ट फॉर्मिंग, है ना। ऊपर ऊपर से एक हल्की सी परत आ जाती है बर्फ की, फिर हम फिंगर डाल के देखते हैं कि हम निकाल सकते हैं नहीं, समझ सकते हैं, अरे अगेन इट्स लिक्विड, अभी तो नीचे से भी गीला ही है, अभी नहीं निकालेंगे, टूट जाएगी, है ना। फिर थोड़ा सा और वेट करते हैं, और समहाउ 6 to 7 आवर्स में हमारी आइसक्रीम रेडी होती है, पूरी जमी हुई आइसक्रीम। तो अब वो प्रोसेस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फ्रीजिंग, यहाँ पर वो होता है कब हमारी आइसक्रीम जो पहले लिक्विड थी, बर्फ बनना स्टार्ट हुई, वो टेम्परेचर उसको मिला, उसका वो टेम्परेचर हुआ, देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग व्हाट, आइसक्रीम। ठीक है, तो अगेन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर हम आइसक्रीम की बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर आइसक्रीम्स। ठीक है, ये हमने आइसक्रीम डाली, ठीक है, तो भी आइसक्रीम हम कह सकते हैं आइसक्रीम मिक्सचर, क्योंकि इट्स नॉट आइसक्रीम येट, हमने इसको फ्रीजर में डाला, इट्स इन फ्रीजर, ठीक है। एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, लिक्विड इज नाउ चेंजिंग इनटू सॉलिड, सॉलिड लिक्विड से सॉलिड बनेगा, तभी हमारी आइसक्रीम बनेगी, ठीक है। और वो टेम्परेचर, या फिर पहले हम प्रोसेस की बात करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अब हम यहाँ पर जमा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस, ठीक है, फ्रीजिंग कब होगा, एक टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा जब हमारी बर्फ बनना स्टार्ट होगी, और उस टेम्परेचर को वी कॉल इट फ्रीजिंग पॉइंट। इसको लिखो, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें जो है हमारा जो लिक्विड है बर्फ बनना स्टार्ट होता है। सो राइट डाउन एवरीवन, ये तो आराम से लिखो जल्दी से, क्योंकि तुम्हारे मतलब की बात है कि आइसक्रीम कैसे और कब बनती है, ठीक है। सो अगेन वी कैन राइट द डेफिनेशन, इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which, it is the temperature at which a liquid changes into a solid। अब यहाँ पर सॉलिड बन रहा है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। सब इसको लिखो बेटा, ये तीनों डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए नाउ, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यू ऑल शुड नो अबाउट दिस। India, is it done? Okay, note down beta first. Okay, so now let's move further.
अब हम आते हैं थर्मोमीटर पे जो हम पहले पढ़ रहे थे। ओके ओके, नोट डाउन बेटा। डन बेटा। ओके, so now thermometer. Now thermometer we use to measure temperature. So सबसे पहले we are talking about clinical thermometer, जो हमारे घर पे हम अपना जब बुखार आता है उसके लिए यूज करते हैं। द फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। आजकल तो डिजिटल आते हैं, सीधा रीडिंग हमें दिख जाती है, बट एक उसको भी हम क्लिनिकल ही कहते हैं बिकॉज दैट वी आर यूजिंग फॉर आवरसेल्फ। ठीक है, तो पहले कैसा होता था बेटा, और अभी भी डॉक्टर्स दे यूज इट। तो ऐसे इसको ड्रॉ करो, ऐसे बनाओ, एवरीवन ड्रॉ इट। सब थर्मोमीटर बनाओ, एवरीवन ड्रॉ दिस। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर करके हमने बनाना है। इट इज लाइक दिस ट्राइंगल था, और यू कैन से माउंटेन की पीक जैसा। टेक इट लाइक दिस, and in this we have mercury. Okay, mercury is here. ठीक है, और यही नंबर लिखने हैं जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, 32, 33, 34, सॉरी नॉट 32, जस्ट वेट अ मिनट। Okay, 35 to 42, and these are in degree Celsius. Okay, Celsius. जो नंबर्स लिखने हैं इसमें 35 to 42 ही लिखने हैं, ना इससे कम ना ज्यादा। और ये जो हमने ये माउंटेन की पीक बनाई है, इट इज कॉल्ड किंग। ठीक है, अब किस किस ने घर पे देखा है जब थर्मोमीटर यूज करते हैं पहले उसको ऐसे झटका दिया जाता है? किस किस ने नोटिस किया है? हैंड रेज करो। ओके, सभी ने ध्यान दिया है, दैट्स गुड, गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो आप सबने ध्यान दिया, ऐसे किया जाता है। कभी नोटिस किया है व्हाई दे आर डूइंग सो? क्यों कर रहे हैं ऐसे वो? कितने करते हैं ऐसे? ये बेटा उसको पीछे लेके जाना। मरकरी को पीछे कहाँ पर, यहाँ पर लेके आना। ये जो एलिवेटेड है ना, बाई चांस अगर इधर मरकरी है, यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी हियर, अभी पीछे होनी चाहिए, ताकि एक्चुअल रीडिंग हमें मिले। करेक्ट रीडिंग, वी गेट करेक्ट और वी कैन से एक्चुअल रीडिंग। तो इसलिए उसको पीछे जो है लाने के लिए वी गिव अ जर्क। ठीक है, ऐसे झटका दिया जाता है थर्मोमीटर को। ठीक है, देन कमिंग टू मरकरी। मरकरी को यूज क्यों किया जाता है? फर्स्ट थिंग, इट इज शाइनी, चमकीला सा होता है, जैसे सिल्वर होता है। तो दूर से ऐसे थोड़ा सा करोगे, एंगल लोगे तो यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, एंड सेकेंड, इट एक्सपैंड। ठीक है, ये एक्सपेंड करती है, तो दैट इज द रीजन वी यूज मर्करी ओवर हेयर। ठीक है, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस आल्सो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन भी है इसकी।
कि मरकरी का जो टेम्परेचर रेंज है इट्स नॉट वेरी वाइड, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर हमने लोएस्ट टेम्परेचर, अगर हम कोई बहुत ठंडी चीज है, सपोज कर लो इट्स -100 और समथिंग लाइक दिस, वहां पर हम मरकरी को नहीं यूज कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ मरकरी, उन थर्मोमीटर में, ठीक है, जहां पर बहुत ठंड है, ठीक है, या फिर हम के कि इट इज like if we say about mercury, its lowest temperature freezing point is -39 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे ये बर्फ बन जाती है, ठीक है। कौन से टेम्परेचर पे? -39, सो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, वी कैन से इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 39, सॉरी मरकरी, ठीक है। अब अगर हमने -40 का देखना है, कोई जगह ऐसी है जहां पर इससे भी नीचे का टेम्परेचर है, ठीक है, तब हम कैसे लेंगे रीडिंग? सो इन दैट केस, इंस्टेड ऑफ मर्करी वी यूज एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल को यूज किया जाता है, बट एल्कोहल में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। व्हाट प्रॉब्लम्स? लेट्स सी हियर। इट इज कलरलेस। क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी? कलरलेस है, हमें दिखेगा ही नहीं कि एक्सपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो व्हाट वी डू, इसमें कलर ऐड होता है ताकि हमें पता लगे कि जब वो ऊपर को जा रहा है तो कितना जा रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल रीडिंग, ठीक है। सो इन दैट केस, जहां पर ठंडा इलाका होता है बहुत, देयर वी यूज एल्कोहल, ठीक है। लेकिन ज्यादा गर्म जगह पे हम एल्कोहल यूज नहीं कर सकते। अब इसका ड्रॉबैक भी हो गया, एल्कोहल बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जो हमारे हैंड सैनिटाइजर है उसमें अल्कोहल है, ठीक है। अगर उसके पास, अगर हम जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जाएं, क्या होगा? इट विल कैच फायर, उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। सो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, जो भी हमने थोड़ी देर पहले अच्छे से डिस्कस किया है, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज, लिखो इसे बेटा, 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। So now we discussed about clinical thermometer today. ठीक है. In the next class we will discuss about lab thermometer and we will discuss about the unit conversion. ठीक है, जो हम ये डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं या फिर हम फ़ारेनहाइट की. So we are going to discuss about this in detail in the next class. Okay? तो I hope तब तक आपका चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा. So it will be easy for you to learn. ठीक है. So bye student. Now your math class is going to start and those who wants to note down, you can note down. ठीक है. Real life, you when we use plus sign and when we use negative sign. Okay, using the sign, write down the heading integers. Okay, so to use plus or minus in real life. Okay, daily situation में how will you come to know that we have to use +7 or -8, -80 या फिर +70? Okay, we have to decide in real life कि कब हम positive sign use करेंगे और कब हम negative sign use करेंगे. Okay, please write down a list of that. Mark a line like this. Scale is not required. Straight line अपनी hand से join कर लो and write down positive sign. यहाँ पे लिखो नेगेटिव साइन. ओके, सपोज वी डिपॉजिट समथिंग. डिपॉजिट मीन्स कि कुछ मनी हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में. ओके, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस साइन. डिपॉजिट ऑफ मनी. जब भी आपको मनी डिपॉजिट करनी है, कहीं पे आपको ऐड करनी है, तो आप उसमें यूज करोगे प्लस साइन. बट यहां पे क्या यूज करोगे? विथड्रॉल. जब आपको नेगेटिव साइन यूज करना है तो आपको विथड्रॉल का जो है नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा. विथड्रॉल ऑफ मनी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, उसके बाद वी विल डू द क्वेश्चंस आल्सो. विथड्रॉल ऑफ मनी.
of money. Okay, beta. And then second point is going up the ladder या फिर stairs when you are going upstairs. Lift किस किसने use की हुई है? Do you ever use the lift whenever you go out in the market or somewhere in the mall? Yes, you know it. Okay, in many places there are lifts. Okay, when you have to go up, you go upward and go in the positive direction. When you have to go downstairs, then you use negative sign. Going upstairs, up the ladder, और यहाँ पे है coming down the ladder. Okay, so when we are coming down, we will use negative sign. When we are going up, we will be using positive sign. Then we have profit loss. You have read in your 5th class. Sometimes you have profit, sometimes you have loss. So profit or gain, they have the same meaning. कि आपको gain हो रहा है या profit हो रहा है, एक ही बात है, ठीक है? And C1 is loss. This is your negative sign. जब भी आपको किसी चीज का loss होता है, it means कि something is taken away from you. Loss हो गया आपको, ठीक है? Then we use rise in temperature. Rise in temperature. जब आपकी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो फिर आपके पास टेम्परेचर जो है वो rise हो जाता है. Rise in temperature means hot. Okay, when you put on AC at home, when it is at 27, you will say, oh, it is so hot. Temperature थोड़ा down करो. Down means you are going downwards. You are going towards a downwards, and rise में you go upwards. ठीक है? इसमें क्या होगा? Rise का उल्टा क्या होगा? Rise in temperature. What would you write down? What will be the opposite of rise? Rise in temperature or fall in temperature? Fall in temperature. तो ये सारे जो साइन है, ये सारे अपोजिट होंगे एक दूसरे को. रियल लाइफ में व्हेन वी टॉक अबाउट दीज ऑल थिंग्स, इनके अकॉर्डिंगली हम उसका साइन यूज करते हैं, ठीक है? देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट above the sea level. Above the sea level. अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी. I will come to know. I will let you know कि what do you mean by above the sea level or below the sea level. Below the sea level. Okay, you have read in science also these all things. है ना? साइंस में भी आप टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हो. About thermometer you read, you know how to use a thermometer. Okay. Now, these are the 5 points I have written here. There are many more examples. Going to the towards north. What will be the opposite of north? North का opposite क्या होगा? Raise your hand who know it. What will be the opposite of north? Yes, fancy section. Third bench boy. Opposite of north. Fancy section, third bench boy. Yes. Yes, आगे आ जाओ. Write down one more point. F point. Going towards north. इसका उल्टा क्या होगा? You have read in geography in your SST book. You have read about what will be the opposite of north. South. South. Okay. If you have this direction, if you're going towards north, you will say I'm going towards positive, and when you're going towards south, you will say I'm going towards negative direction. Okay, sit down, beta. Sit down. What will be the opposite of east? Well, you know it. When we go towards our directions में आपको पता है कि opposite we take the, when we go in opposite direction we take the opposite sign.
So here F point you can write down. Going towards north, here going towards south. So such are the conditions in real life when you use positive sign and negative sign. Okay, now we'll be doing examples. We'll be writing few points. In number form, how do we use? Okay, I'll be asking you. Be very careful while telling me. Okay. Please take care. In this chapter, in integer chapter, you have to take care of this line on the number line. You know, all the positive signs are on the right side and all the negative signs on the left side. That you know. Everybody knows it? Yes, you know it. Second thing, when you see a thermometer, in thermometer क्या होता है? Thermometer में फिर से there are readings. Whenever there is zero over here, above zero, there are the all positive signs. +1, +2, or +10, +20, and so on. Okay? And below when we go, they are all negative. Temperature falls. यहाँ पे temperature falls, and here temperature rises in thermometer. Okay. On number line, you know, when you go to the right, they are positive. When you go to the left, they are negative. Okay. Now, in the north and south direction also, okay, when we are moving in one direction, if we are going towards north, opposite direction we will take as negative. You only told me just now that you know. Okay, one thing more I want to tell you. We talk about above sea level, below sea level. What do you mean by that? In maths, you have many questions of such kind. Ki there is a distance of above sea level, then there is a distance of below sea level. What do you mean by that? Have you ever read? Okay, listen to me here. What happens? See, this is zero level, which is called sea level. Okay. You know, when we talk about below sea, we talk about this all. We call it below sea level, where all the points are negative. We take all the distances as negative. And when we talk about above sea level, we talk about this, above sea level. How? Why in real life, how we talk about above sea level and below sea level? You know, sea level is this. Here we talk about zero. कोई sign नहीं है यहाँ पे. Above sea level, suppose an aeroplane is going, right? Aeroplane is going at some height above the sea level. We take it as a positive. कभी आपने देखा कि एरोप्लेन below the sea जा रहा है? Sky में जाता है ना एरोप्लेन? So above the sea level, when we say an aeroplane is flying, we always take it as positive distance. But when we talk about a submarine, which moves below the sea, जो पानी में ही घूमती है, submarine. When submarine is moving, it is moving below the sea level, and then we will take negative sign. Have you heard the name submarine? हाथ खड़ी करो, raise your hand. Have you heard it? Okay, good. Hands down. Very good, very good. Hands down. Okay, below sea level जो movement होती है, that is a special जो ship होती है, उसको हम बोलते हैं submarine. It moves below the sea level. अब उसकी हाइट देखने के लिए कि वो कितनी डेप्थ में घूम रही है, कितने सी लेवल से कितनी नीचे घूम रही है, उसका डिस्टेंस देखने के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं. एरोप्लेन जो स्काई में घूम रहा है, उसका लेवल देखने के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं. Okay, now we'll be writing small questions which will tell you ki how we use the sign. See here, first I'm taking an example. Write down examples. ऊपर heading लिखो. Example. Small examples we are going to write. First is an aeroplane
an aeroplane flying at a height of 2000 meters. 2000 meters. What will you use here? 2000 एक number है. Now you have to think of कि whether we'll be using plus or minus. Height of 2000 meters. To say positive sign, we'll use positive sign. Raise your hand. Who think of it? Ki yes, we'll use positive sign. Yes. Good. 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 Very good. Hands down. You know, by standing on the ground, we will measure the height. We will see the height of the aeroplane. That will be positive 2000. We'll write down 2000 meters. Okay. And generally, हम positive sign को लिखते नहीं है. So we can write it as without sign also. Okay. So we can write it as only 2000 meters. No need to put positive sign. Okay. Second point. Depositing 5,000 rupees, 5,000 in bank. Depositing word is most important, which is telling you about the sign. Okay, think of it. Who know it, they can write down. अभी मैं पूछूंगी आपसे. Don't tell each other. Write on your own. Okay. अपने आप सोच के लिखो. अभी हम डिस्कस करेंगे आंसर्स. Submarine moving at depth of depth. जब हम नीचे की बात करते हैं ना, ग्राउंड लेवल के नीचे की बात करते हैं, we talk about depth, not height. Okay, height हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? When we talk about up. अपने से ऊपर की बात करेंगे तो ग्राउंड लेवल के ऊपर की बात करेंगे, we will talk about height. When we talk about below the ground level, we talk about depth of that. ठीक है, submarine moving at depth of 200 meters. Write down yourself with the sign, okay? Don't tell each other. Port 5 kilometers towards north. 5 kilometers towards north. 6 degrees Celsius above 6 degrees Celsius above normal temperature. कोई भी normal temperature है, उससे ऊपर something 6 degree above. Let us discuss these all first. Okay. Daffodil section. Just need card. Okay. First bench. जिनके पास वो पड़ा हुआ है, mic पड़ा हुआ है, please tell me. What should be the sign of this? This one. Depositing 5,000 rupees in bank. What it should be? You can tell me by sitting. What sign should be with the 5,000? Positive or negative? Positive, yes. Positive. It needs to be positive sign. We can write without sign. Normative, very good. Next is a submarine moving at depth of 200 meters.
सेंटेंस को देख के आपने खुद साइन को चूज करना है. ओके. Submarine moving at depth of 200 meters. Row section. Row section. Be ready. Kushmaldeep for. Yes, very good. आ जाओ. Kushmaldeep. She's gone for paper. Okay. Can you tell me, beta, what it should be? What should be sign here, beta? Submarine moving at depth of 200 meters. Which sign it should be? Minus 200 meters. Very good. Okay. 5 kilometers towards north. About north, you told me earlier, हम positive sign use करते हैं. Okay. And then is 6 degrees Celsius above. Above is telling us कि हमें positive sign use करना है. That is 6 degrees Celsius positive sign. We are using positive sign. Okay. And by chance, you talk about spending. What do you mean by spending? Spending rupees 100. Which sign you will use? Spending means you go to market, right? You buy something from there. You spend money at the shop. When you buy something, spend money मतलब खर्चा करते हो, ठीक है? और से निकाल के मनी शॉपकीपर को देते हो. Who think of कि ये negative sign होगा? Raise your hand. Who think of spending money will be a negative sign? Very good. Very good. Write down minus of 100. When we talk about sign, we write only the number. Okay? Write down one question. A place is, question लिखो बेटा. A place is 59 meters above sea level. Above sea level. ठीक है? A place is 59 meters above sea level, and another is. And another is, write down the whole sentence so that you can relate. And another is 43 meters below sea level. Below sea level. Okay. Diagram draw करो. यहाँ पे there is the sea level. Above sea level, we are talking about 59 meters. And below sea level, we are talking about 43 meters. When you draw the diagram, the things are very clear to you. Okay, in science also you do like that. जो आपके थिंग स्टोरी सम्स होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप डायग्राम ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करते हो. Okay, same way we will do here. A place is 59 meters above sea level and another is 43 meters below sea level. Find the difference of level. Find the difference of level. Find the difference of level. Level is उनका distance क्या है? Between two places. Between two places. Please note down the whole thing. तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा. And while writing, understand also कि हम क्या चीज की बात कर रहे हैं. A place is 59 meters above sea level and another is 43 meters below sea level. Find the difference of level between the two places. दोनों का difference, level का difference मतलब दोनों को आपस में कितनी दूरी पर है.
That you have to see. Okay. Now, write down the answer. I'm telling you what you're thinking about. आपने सोचना कैसे है? Okay, you have to write down distance from 59 meters to 43 meters below sea level. ठीक है, आपके क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें डिस्टेंस देखना है कि 59 मीटर, जो कि चीज वन प्लेस इज 59 मीटर अबव, अदर प्लेस इज 43 मीटर बिलो द सी लेवल. हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 59 व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 59 and 43 sea level. Okay, and when we talk about this, we will write down 59 minus 43. आपको पता है बिलो सी लेवल में हम माइनस का साइन यूज करते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग minus 43. ठीक है, पिछले हमने जो छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं, यू टोल्ड मी कि बिलो सी लेवल के लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे, अबव सी लेवल के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे. सो वी यूज हियर 59 पॉजिटिव फॉर द अबव सी लेवल and minus 43 for the below sea level. What would you do them? Subtract or addition? What would you do? Addition. Very good. You have read it. 59 minus into minus is plus is equal to 43. Please find out. Total distance कितना है? Please करवा. 102 meters. Your answer. Okay, this is the way we are doing. How we use the sign in story sums. Word problem में कैसे हम sign को use करते हैं. Okay? I hope it's clear. Anything you want to ask? Okay. Next is small question. The time is also going to up. I'm telling you, write the opposite of. Write the opposite of. Write the opposite of profit of rupees 750. What would you write? Which sign you will use? Opposite of profit of rupees 750. Which sign you are using here? Opposite of we are talking about. Plus or minus? Minus. Okay, minus 750. क्योंकि अभी हम opposite की बात कर रहे हैं. Read the words very very carefully कि हम किस word की बात कर रहे हैं. Okay? Then opposite of हमने top पे लिखा हुआ है. Okay? Going out direction of 5 kilometers. साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जा रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट इट विल बी, पॉजिटिव और नेगेटिव? साउथ की तरफ कौन सा साइन होता है हमारा? नेगेटिव. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव. यू विल राइट डाउन प्लस 5 किलोमीटर्स. कैसा आपका नेम है उसको आपने फोकस करना है कि व्हाट नेम वी आर यूजिंग एंड उसका आपने अपोजिट यूज करना है. ओके बेटा, दीज आर द स्मॉल थिंग्स वी आर यूजिंग इन दिस इंटीजर चैप्टर. राइट, लेट अस डू एन इंटरेस्टिंग थिंग. Draw a number line like this, vertical line. Take down 0 over here in the middle. Write down 1, 2,
3, then -1, -2, -3. कोशिश करो, they should be at the equal distances. two fingers के gap पे numbers को लिखो. They should look like equal. Scale is not required. They should be looking like कि आपने equal distance पे उनको लिखा है. Okay. Right. Starting from -3. Starting from -3. -3. It means we are starting from here. Take care. हम यहाँ से start कर रहे हैं. Starting from -3 up 2 kilometers. These are all kilometers here, you know. Kilometers, kilometers and kilometers. What would you do? इसके लिए क्या साइन यूज करोगे? These are all kilometer distances की बात हो रही है. Suppose starting from -3 going up 2 kilometers. Starting from -3, it means you will be writing it -3. Going up के लिए कौन सा साइन यूज करोगे यहाँ पे? प्लस और माइनस? Plus. So you will reach at, where would you reach? At -1. तो डायग्राम में भी देखो कि जब आप -3 से स्टार्ट कर रहे हो, you are going up by 2 kilometers, you are reaching at here. यहाँ पे पहुंचोगे ना आप -1 के बाद. When you count to the number line here, also you can see 1, 2. You stop at -1. And when you calculate, then also you have seen that we have found -1 because we are going up. Second thing, write down starting from 1. We are saying 1. 1 means यहाँ पे ये जो P point है. Okay? From P point. P point से अगर आप start करते हो, coming down. Coming down. Coming down 3 steps. Starting from 1. 1 से start करके 3 steps नीचे आ रहे हो आप. So what would you do? 1. -3. You will reach at -2. You can see in the diagram also. Starting from 1. When we are starting from 1, P point से start कर रहे हैं, you are coming down, you will be reaching at -2. Okay. So this is the way you have to think of. Okay. On the number line also. Generally you read the number line like this horizontally. ठीक है, positive numbers on this side and negative numbers on this side. तो यहाँ पे आपके इंटीजर के चैप्टर में जनरली आप थर्मामीटर की हाइट देखनी है, yes, below the sea level, above the sea level. You talk about this vertical line. तो आपने horizontal line के बारे में पढ़े, same thing you will be reading about vertical line also. Okay, there is no difference. We will do more next time. Solve what we did. Okay, bye bye, beta.